to one of the top focuses of the day. Now, the horrific inferno in Delhi's Mundka has so far charged to death 27 people, while over 29 are still missing. Now, this has been one of the worst fire tragedies the nation has ever seen. The victims are not just physically hurt, but are mentally scared for their lives. The nexus of greed, negligence, illegality, and apathy turned this building into a death trap. अब ये पता नहीं, कोई वर्कर बाहर गया था गेट की तरफ कुछ लेने के लिए। उसने गेट खोला, गेट खोलते ही धुएं के साथ आग अंदर आई थी। जब उन्हें पता चला कि आग लगी हुई है तो हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शीशे तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सर एक्चुअली हमें पता नहीं लगा कि किस टाइम आग लगी है। कहाँ से आग लगी थी? ये फर्स्ट फ्लोर से आग लगी थी सर। और फर्स्ट फ्लोर से क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था? क्या हुआ था ये नहीं पता चल पाया। शॉर्ट सर्किट हुआ था सर, जहाँ तक आइडिया है। शीशा वीसा तोड़ के जिन कुछ ने क्रेन से उतरे, क्रेन पे बैठकर उतरे हैं। अच्छा ये बताओ तो फायर डिपार्टमेंट कितनी देर में आई है? सर 1.5 से 2 घंटा लेट। कितना टाइम लग गया? आप लोगों ने कितनी बार कॉल किया फायर डिपार्टमेंट? सर हमने काफी कॉल किया है। नीचे जो बंदे थे उन्होंने भी काफी बार कॉल किया है। एग्जैक्टली ये हुआ था, हम लोग मीटिंग में थे, अचानक नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ, जनरेटर में आग लगी, धुआं उठा। हम लोगों को समझ में नहीं आया, पहले तो पता ही नहीं चला आग लगी। जब पूरे में काला काला धुआं हो गया, जब पता चला आग लग गई, भगदड़ मच गई। शीशे तोड़ना शुरू करे, शीशा टूट नहीं रहा, हेल्प मांगी, हेल्प, हमारी आवाज़ किसी को जा ही नहीं रही बाहर। Now, the list of lapses is criminal. Times Now's relentless investigation has exposed criminal lapses which aren't just born out of negligence but greed. Not only was the building illegally functioning for the last 15 years without a commercial license, without MCD clearance or without an NOC from the fire department, it was built with flammable material and encased in a glass exterior. Now, there is only one entry and exit and no separate fire exits. Now, as these lapses come to the fore, the anger on the ground against the nexus is rising. Remember, not a single civic body official has been named in the FIR filed by Mundka police. हम गरीब पता है पैदा सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि अमीरों की ना जूती साफ करे, जूती अमीरों के तलवे चाटे। हम बचपन से अमीरों के तलवे ही चाट रहे हैं, जिंदगी भर चाटेंगे और एक दिन ऐसा आएगा हम सब सुसाइड कर लेंगे। मेरी मम्मी, हम 3 बहनें हैं और हम अगर मेरी बहन मर गई तो चारों सुसाइड कर लेंगे, हमने सोच लिया है। ब्रदर भाई मेरा। आपकी उनसे बात हुई थी? कब लास्ट टाइम हुई है? जी नहीं, बात नहीं हुई है। मैं सुबह आई थी यहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे आग लगी है, मैं वहाँ से पता करके आई हूँ कि 100 लोग से ज़्यादा मर गए और न्यूज़ पे ये बता रहे हैं कि 27 लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हैं, इतने बता रहे हैं। और अंदर घुस के देखने में नहीं दे रहे कि भाई अपनी फैमिली को चाहे वहाँ पर नहीं हो तो वहाँ पर मिल जाए कोई। अब क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब आप लोग? इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मिसिंग गुम लिखवाना, रिपोर्ट वहाँ भी लिखवाया था, अभी मिसिंग का लिखवा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है, कोई खबर नहीं मिल रही है। कोई खबर नहीं मिली, कोई भी नहीं बता पा रहा है। अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया? तो वहाँ से कुछ नहीं कहा गया, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया हो तो मिसिंग उन्होंने लिखवाया है, मिसिंग रिपोर्ट बनवाया उन्होंने। नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है। कब से काम कर रहे थे? कौन था? बता रही मम्मी 3 साल से काम कर रही थी, मम्मी है मेरी। Now, if the building was illegally being used for commercial purposes for the last 15 years, while authorities turned a blind eye with an MCD clearance or fire department NOC, who allowed this urban death trap to continue unabated? Now, Times Now demands answers and accountability from the North Delhi MCD boss to the local SHO and fire chief as well. We put some direct questions to them. Listen to them, Doc and Dodge. We received a call around say 4:50 in the evening, and we rushed the 8 fire tender immediately, and later on we total fire tender rushed by 30. Sir, there are talks that there was no fire NOC for this building, sir. Can you confirm this? Yes, sir. There was no fire NOC, no fire. It is a very sad incident, tragic incident which happened in Delhi, and in this 27 people are dead right now, and the police came on the spot and the call received, and we opened this. We break these glasses and with the help of public we entered the building and we rescued 50 to 60 people. But the remaining people which are inside, they are not able to be get out. सबसे पहले तो जो ये हादसा हुआ उसके लिए मैं दिल से दुख व्यक्त करना चाहता हूँ और जो भी मृतक लोग परिवार हैं उनको अपनी संवेदना देना चाहता हूँ। और ये बड़ा दुखद हादसा है जो आज पूरे देश में इसकी
खबर गई है। भाई इसमें तो देखो सारा बीजेपी का रोल है। अब ये बिल्डिंग अवैध बनाई गई थी या ये जो कार्य होते हैं ये सारा सेंटर में, मतलब यूँ लगा लो कि दिल्ली सरकार की तो आधी चलती है, ऊपर सारी तो बीजेपी की चलती है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी बेचारे क्या कर पाएंगे। Let me go across to my colleague Sabyasachi, who is joining me live on the broadcast. Sabyasachi, first of all, what's the latest update as far as the identification process is concerned, and also any update on the death toll? Well, around 29% is missing, and the more focus is on to identify them. And so far, around 8 people have been identified, and clearly the forensic department is at work. Yesterday we had seen that they visited the spot, and today also they might visit the spot because they are collecting the samples as well as the explicit like tissue materials or bones from the spot where the incident happened, which will help them to identify the person who has been missing. So clearly, over and all, it's a very unfortunate incident that taken place, but clearly a question should be asked to the civic bodies, because this is not the first time that such incident has happened in the national capital. Over the past, we had seen several such incidents had happened in buildings which were illegally constructed. There was no proper fire exit. There was no certificate from the fire department yet. But the major question here is, will now the MCD act against such types of building in the national capital? Because this is not just one of the buildings across the national capital, but there are several other buildings which are continuously flouting these basic rules which MCD should have been looked time and again. And the building has been there over for 15 years. And what was MCD doing? This is the major question that Times Now is also asking. And the FIR has been lodged. There has been 2 persons who has been detained, but no civic body official name has been there in that particular FIR. So why has been the investigation going on one-sided? Why not the FIR has been lodged against the officials who have turned a complete blind side towards these buildings in the national capital? And we had seen that people has been in pain. The families has been on hospital. They are continuously visiting the spot to know about their loved ones. There has been people whose father has died in COVID. She has taken up the job after her father died, and now she is missing, and there is nobody to earn for her family. So there are these kind of people who have been suffering. Their family have been suffering. They have been running to hospitals. They have been running to the spot where the incident happened, but they are not yet getting any sort of answers. So now the work for the forensic department is very crucial to help identify the missing people as soon as possible, and at least give some relief to the people who have already suffered a lot. Okay, so that's the latest update that my colleague just described on the broadcast. Thank you, Sabyasachi, for all those updates. Now